हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स मैं यूनिट 1 स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी मैं यूनिट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइक ये यूनिट 1 जो है ये टोटल सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बिफोर गोइंग टू एक्सक्यूज मी, बिफोर गोइंग टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स, हम लोगों को पहला जो है फिजिक्स ऑफ सॉलिड जानना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल आर डीलिंग विथ सॉलिड डिवाइसेस। नाउ ये सॉलिड का टर्म जब भी आता है तो हम लोगों के दिमाग में पहला सवाल ये होता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड or how or what kind of properties matter shows to be called as solid. तो पहले सबसे foremost thing है molecular bond. So as we all know in our previous classes 11 12 में के मॉलिक्यूलर बॉन्ड जिसका जितना क्लोजली कनेक्टेड है या स्ट्रॉन्ग है वो सॉलिड के तरफ उसका दिस इज मोर this device which has the matters which has strong molecular bond will show the properties of solid. Like अगर molecular bond के रेस्पेक्ट में अगर हम जाएंगे तो हम लोग देखेंगे closely bonded और एक है सेमी क्लोजली और लाइटली बॉन्डेड, और हम लोग कह सकते हैं सेमी क्लोजली और नॉट सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और आई कैन से वीक बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और एक है वेरी लूजली बॉन्डेड। तो हम लोग एज इन आवर प्रीवियस नॉलेज हम लोग देखे हैं कि जो वेरी लूजली बॉन्डेड है दीज आर बेसिकली गैसियस गैसियस एलिमेंट। गॉट इट? मेनली गैसियस एलिमेंट। सेमी क्लोजली और वीक बॉन्डिंग जिस मैटर के अंदर है दे आर लिक्विड मैटर्स, एंड क्लोजली बॉन्डेड जो है दीज आर सॉलिड मैटर। सो नाउ हम लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दिस सॉलिड। ये हम लोग लिक्विड गैस इस सब के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ऑफ सॉलिड इज टोटली कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉलिड। नाउ सॉलिड में भी हम लोग जब जाएंगे व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी द properties, the feature and the characteristics about solid, we will see that solid also can be classified depending on their conductivity. Okay, ये point याद रखना, depending upon the conductivity. So depending upon the conductivity, solid also can be classified into few categories, mainly three categories. Like first one is हम लोग insulator को देखेंगे, next is conductor, and last one is semiconductor. तो फर्स्ट हम लोग फोकस करते हैं इंसुलेटर पे। तो इंसुलेटर क्या है? द मैटर विच कैन इंसुलेट। इंसुलेट मतलब हम लोग जानते हैं जो मैटर अपने अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन या
करंट मूव नहीं कराता, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। लाइक इंसुलेटर, दैट इज लाइक वुड, पेपर्स, एक्सेट्रा। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल वुड है। नाउ क्यों नहीं कराता? लाइक इन लोगों के अंदर जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है ये अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने को, और ड्यू टू व्हिच सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर फेल टू मूव इनसाइड दिस मैटर, no current will pass through this insulator. So we can say insulator in which the electrons or the current cannot move inside the matter is known as insulator, और हम लोग कह सकते हैं जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जीरो है। दैट मीन्स कंडक्टिविटी है ही नहीं, वो कंडक्ट ही नहीं करा सकता। लाइक वुड, अगर एक वुड को, वुडन बाड़ को या वुड के किसी भी पार्ट को हम अगर इलेक्ट्रॉन पास कराना चाहेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू पास द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द वुड। ओके, दैट्स व्हाई इंसुलेटर। दूसरा भी एग्जांपल है बैकेलाइट, जो हम लोग स्विच वगैरह में यूज करते हैं, प्लास्टिक्स। They are all under the insulators. That means they can't conduct the current. Next आता है कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या करता है? Which can conduct the current inside it. So that's why it is known as conductor. So conductor क्या करता है? The electrons or the currents very easily move inside the matters. So like इसका एग्जांपल है आयरन, सबसे बढ़िया एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम। Aluminum को हम, aluminum wire can be used, so aluminum is also under the conductor. So यहाँ पे क्या होता है? Their molecules are so much cooperative with the electrons, so that very easily one electron can move from one side to other side. That is conductor. Now यहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल होता है, कुछ कुछ मैटर होता है जो वेरी इजीली भी इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करता है, और एक सर्टेन पीरियड तक वो मूव नहीं कराता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड वो मूव कराता है। दैट मीन्स एट ए सर्टेन पीरियड इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, and after the certain period it will act as a conductor. So in between conductor and insulator, the third type of matter is known as semiconductor. So it is in between conductor and insulator. So like silicon and germanium, ये मटेरियल क्या होता है, मैटर क्या होता है? शुरू में ये एक्ट एज एन इंसुलेटर, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड external energy will be given, and after some certain time period the internal electron can be excited by the external source, and then it will free to move from one end to another end, so that I can say current will pass from one end to another end after a certain period. So after a certain period, it will act as a conductor, and before that time period or before that level of threshold level, we will discuss whenever we will discuss the Fermi level. That after that period, before that period, it will work as a insulator. So this is all about solid, and in the syllabus, according to the syllabus, that we will discuss about only semiconductor material rather than conductor and insulator. So basically conductor and insulator is not part of this lecture. We will discuss about
semiconductor. So now semiconductor we will start. So the point is semiconductor. So semiconductor, first of all, we will go for its definition. So definition. So if I will read the definition very closely, then all idea about the semiconductor will be clear. Okay. So first of all, semiconductor. So semiconductor, I can say a semiconductor is a solid element or compound that has electrical properties in between conductor and an insulator. So keep in mind that is semiconductor is a solid element or compound that has electrical properties electrical properties between conductor and insulator. So in the definition, it is quite clear that what do you mean by semiconductor. Now, uh, most of the around all of electronics components or electronics devices are made up of this semiconductor device. So mainly pure pure semiconductors are mainly used, that is germanium and silicon. Yeah. And some impure semiconductor impure semiconductors are gallium arsenide or cadmium selenide. Gallium arsenide we will mainly use. Okay? Gallium arsenide. So whenever mainly we are using semiconductor in most of the electronics devices. Now what is the useful property, that is why, because पहले हम लोग देख चुके हैं कंडक्टर ऑलरेडी कंडक्ट द करंट. सो व्हाई, क्यों क्यों हम लोग सेमीकंडक्टर को ही ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने के लिए. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज तुम लोग दो गाड़ी से सवारी कर लो. एक है बाइक हैविंग हाई स्पीड बाइक 120 किलोमीटर पर आवर में, और बाइक वन में एक हो, और बाइक टू में और एक बेटे हो जिसका स्पीड है 40 टू 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, या इसको हम लोग और क्लियरली समझने के लिए लेता है 30 टू 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, नहीं 30 टू 40 किलोमीटर पर आवर. नाउ दोनों पैरेलली बाइक में जा रहे. ठीक. सो नाउ सडनली अगर यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल आ जाए तो अमोंग दिस बाइक वन एंड बाइक टू सडनली अगर ऑब्स्टेकल आ जाए तो मुझे ये बताओ कि किस में तुम्हारा कंट्रोल करने का चांसेस ज्यादा है. डेट मीन्स किस बाइक को तुम वो ऑब्स्टेकल को हिट करने से बचा पाओगे.
अचानक से ऑब्स्टेकल को हिट करने से बचा पाओगे। तो तुम लोगों के लिए सवाल है। हाँ, तो ऑब्वियसली बाइक टू कैन बी इजीली स्टॉप्ड, ओके, with compare with bike one. So same thing happens to semiconductor device or electronics device. That is, in conductor, current is highly conductive. The matter is, sorry, the matter is highly conductive. So current will, let's see, will pass through the conductor with, say, the speed of the first bike. Semiconductor has the electrical properties in between conductor and insulator, so I can say it has conductivity but not uh, more than conductor. ऑब्वियसली कंडक्टर से कम है, इंसुलेटर से ज्यादा है, तो इंसुलेटर का कंडक्टिविटी जीरो है, तो ऑब्वियसली जीरो से ज्यादा है बट कंडक्टर से कम है। तो मैं मान के चलता हूं कि सेमीकंडक्टर का स्पीड कंपेयर अगर करेंगे तो बाइक टू के साथ कंपेरेबल है। So now, if I am going to control the electrical current inside the electronics device, which is very much required, whenever you are going to pass the current inside the electronics device, obviously you have to send it in a controlled manner, because हम लोग देखते हैं हम लोगों का जो household voltage है near about 220 volt, 220 volt to 230 volt, ठीक है। लेकिन हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, तो हम लोग देखोगे वहाँ का आउटपुट लिखा रहेगा 30 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये आउटपुट ऑफ द चार्जर और इनपुट प्लग ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। सो ऑब्वियसली 220 volt to this 30 volt, 15 volt और 10 volt यहाँ कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली मैं अगर कंडक्टर यूज करूंगा तो आई कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट इनसाइड दैट मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, टेलीविजन, स्मार्ट वॉच और चार्जेबल एनी चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। But if I will control this input voltage of the electronics component, then obviously the electronics component will not get damaged, will not be damaged, so I can protect the device. So as मैं एग्जांपल में कहूँ, अचानक अगर ऑब्स्टेकल आ गया है तो मेरा जो 120 किलोमीटर पर आवर में जो बाइक चल रहा है, ऑब्वियसली मैं उस बाइक को बचा नहीं पाऊंगा, ऑब्वियसली वो बाइक एज इट इज नहीं रहेगा, इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बाइक डैमेज होगा। लेकिन वही अगर ऑब्स्टेकल अचानक से आ गया और मेरा बाइक 30 to 40 किलोमीटर पर आवर में रहा, तो ऑब्वियसली मैं ब्रेक लगा के कंट्रोल करके वो बाइक को अंडर कंट्रोल लेके उस बाइक को डैमेज होने से बचा पाऊंगा। तो बेसिक motto or basic main aim to use semiconductor instead of conductor in the in the electronics device is, first one जो मेजर है that is controlling electrical current, controlling electrical current। second one, तो कंडक्टर क्या करता है, सपोज हाईली कंडक्टर जो है हम लोग क्या करते हैं, तुरंत करंट एक पॉइंट से दूसरे जगह पे पास होता है। तो सिंस यहाँ पे करंट के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली आई कांट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द करंट इनसाइड द कंडक्टर, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर आई कैन पास द करंट, that is passing the current in one direction, one direction। Next is conductor
does not have variable resistance. Okay, whereas semiconductor devices has the variable resistance, so that some semiconductor device will get charged in 30 volt, some semiconductor device or some electronics component will charge in 15 volt, some semiconductor or electronics component will charge in 10 volts. So third point is variable resistance. Next, फोर्थ सपोज तुम एक तार को इलेक्ट्रिकल वायर सभी के घर में है, सभी ने यूज किए हो, सब कॉपर वायर यूज किए हो, उस कॉपर वायर इज नॉट एज सेंसिटिव एज योर लाइट और हीट। अगर एक कॉपर वायर देखोगे, यूज हो रहा है, सालों सालों तक चल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे लाइट ज्यादा है या कम है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं एक स्मार्ट टीवी या मोबाइल फोन को ही देख लेते हैं, अगर ये चीज कंडक्टर यूज होता तो क्या होता, सिंस मोबाइल फोन इज वेरी हैंडी इज एंड इट इज ऑलवेज विथ अस, सो क्या होता अगर ये सेंसिटिव नहीं होता तो क्या होता, सपोज मोबाइल फोन हीट जनरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू कांट टॉलरेट द हीट टू होल्ड, सो प्रॉब्लम विल अराइज। नाउ केस क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होने से क्या कर रहा है, ओवरहीट जैसे ही मोबाइल फोन हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन उसको दे दिया गया है कि अगर ओवरहीट हो जाए तो मोबाइल फोन विल गेट स्विच ऑफ और इट विल पास मैसेज टू यू, दैट इज नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर मोबाइल फोन इज टू मच इज हीटेड टू मच। ठीक है, सो I can say the fourth point uh, that is also indicates the use of semiconductor in electronic devices is sensitivity to light or heat. Okay, so these are the reason why I am using, why semiconductor is used in electronics devices. Got it? Now, where to use? Where to use? So, where to use? Now, where to use? The first one is, as we know that all the electronics components, so most of the electronics components are used to communicate. Okay? So, as I use that communication, in communication we can use semiconductor. Next is computing. Computing we can use semiconductor. Third one is healthcare. Healthcare. Fourth one is transportation. Fifth one is military system. Military system. Sixth one is clean energy. Clean energy. So these are the field basically mainly where we use the semiconductor. So this is the basic overview of semiconductor. Now, in the beginning, I mentioned 2 points in the semiconductor, that is, you see pure semiconductor and impure semiconductor. Okay. So, what is that? What do you mean by pure semiconductor and what do you mean by impure semiconductor? So, this topic
we will discuss in the next video, that is intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So that's all for this. Okay, see you next video. Thank you for watching.